Abhishek ji, we will definitely take your query. What Indian Arclis 345 share at 770. Uh, Abhishek ji, just wait for a couple of more minutes. We have Dev sir with us today for the morning session. So let's wait for him. He will be the very right person to guide you. आपके सारे सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट देव सर देंगे. So just let's wait for a couple of more minutes. And before we start the session, guys, we just want to give you an update so that we have an IPO session today at 11:30. अगर आपको पता नहीं होगा एक IPO आ रहा है that is वारे. So उस पे ही हमारा एक सेशन है. वारे IPO है जो कि स्नेहा पोद्दार लेगी from the research team. So yes, make sure you join us today at 11:30 AM in the morning, जो कि IPO सेशंस के बारे में होगा. उसमें आपको बताया जाएगा क्यों आपको ये IPO सिलेक्ट करना चाहिए एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये कंपनी का फंडामेंटल कैसा है. सो एवरीथिंग एंड टू एंड, ये सारी डिटेल्स आपको स्नेहा पोद्दार जी आपको दे देंगे वो सेशन में 11:30 बजे. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द सेशन. And also we have the commodity gold mini expiry today at 6 p.m. in the evening, and it will be none other than hosted by Ashish Rajodia sir. So हम हमारे सेशंस को सारे आज सुबह ही अपडेट कर रहे हैं कि आप कुछ भी सेशंस मिस ना करो आज. So yes, we have Dev sir with us today. Dev sir, please let me know if you can hear me. Yes, I can hear you. We will begin in a minute. Is it okay? Dev, your voice is not audible. I'm saying yes, audible now. Yeah. We'll begin in a minute. Okay, great. Welcome everyone. I still see people are joining now. So just an heads up once again guys कि हमारा आज 2 सेशंस और होने वाला है. सॉरी 3 है, उठ से इसे छोड़कर 11:30 बजे हमारा होगा IPO का सेशन. वारे जो नया आ रहा है वारे, उस पे हमारा एक सेशन होने वाला है. एंड उसके अलावा हमारा कमोडिटी का भी एक्सपायरी है गोल्ड मिनी पे. सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू जॉइन द सेशन. So yes, let's wait for Dev sir. Yes, he's here. Yes. Over to you, sir. Okay. So good morning, everyone. My name is Dev Parekh, and for today I'll be your expert. And so talking about the levels first. So Nifty ka support is very not talking about the support. Nifty ka resistance is nearby, almost बस 40 पॉइंट दूर है. So Nifty का support होगा 24,850. Oh, my bad. Sorry, resistance 24,850. Then at 25,000. So सिर्फ almost खाली 30 पॉइंट दूर है इसका resistance, जो first resistance है. Second resistance at 25,000 and support at 24,650. Bank Nifty support at 51,750. Then at 51,500. While upside resistance at 52,350. Then at 52,500. Talking about today's expiry, that is Fin Nifty. Support at 23,850 and resistance at 24,200. Talking about few stocks on our watch list for the day, आज हम नजर रखेंगे ICICI Bank पर. Then we'll be keeping a watch on Mazgaon Dock, which is almost 5% on the negative side, and CG Power. So ये 3 स्टॉक हमारे फोकस में रहेंगे, CG Power, Mazgaon Dock and ICICI Bank for now. About the intraday trade, we'll soon initiate it. Till then, we can take few queries. Avinash, you are on mute. Sorry. So Dev sir, do we have any stocks that we can carry forward for 2-3 days, like a conviction idea या
Yes. इंट्राडे के लिए कोई सेटअप अच्छा लग रहा है? Definitely, yes. I'll let you know about it. So swing trade की अगर बात करें ना, तो this is particularly what you're asking for is a swing trade, जो एक वीक के अंदर के टर्म के लिए होता है कि एक्चुअली 1 से 2 वीक का होता है, बट यूजुअली स्विंग ट्रेड मेरा कहना है कि 1 वीक के अंदर आप एग्जिट करो तो इट इज बेटर. ओके, तो अगर आप स्विंग की बात करें, मैं आपको 2 स्टॉक बताऊंगा. गिव मी अ मोमेंट. एक होगा हमारा कैंडिडेट, वो है कल्याण ज्वेलर्स. कल्याण ज्वेलर्स के मल्टीपल रीजंस हैं. एक तो फेस्टिव सीजन, उसमें उनका सेल्स बढ़ता है. सेल्स बढ़ता है तो यू ऑलवेज नो when there's growth in sales, there's growth in the stock price as well. So कल्याण ज्वेलर्स होगा हमारा स्विंग. एंड एक सेक्टर वाइज लेंगे. दूसरा स्विंग में वील बी टेकिंग इन्फोसिस. Okay, इन्फोसिस एंड कल्याण ज्वेलर्स. great. So guys, we have to focus on Infosys and Kalyan Jewellers. Dev sir, like you mentioned, we have to focus on Kalyan Jewellers as we are near to the festive seasons as well, right? Correct. So what can be the target we can look for in these two stocks? See, Kalyan Jewellers is right now quoting at around 705.60. I'll show it to you on the chart as well. देखिए, कोई भी स्विंग में अगर आपको अराउंड 3 to 4% मिल जाता है तो इट इज मोर देन इनफ. इट इज लाइक एन ओवर अचीव्ड स्विंग ट्रेड. बिकॉज स्विंग, अगर मैं पर्टिकुलरली चलिए अगर टर्म यूज ना करे स्विंग, तो अगर आपको 1 वीक में 3 to 4% मिल रहा है तो इट इज मोर देन इनफ. तो मैं आपको कहूंगा अभी जो रेट चल रहा है इट इज 704. तो अगर 3% भी इसमें जोड़े तो अराउंड इट विल बी 725. तो आप 725 का अपसाइड टारगेट मेंटेन कर सकते हो वीकली. Okay. This is the bare minimum what we are predicting, or looking at the charts, we are letting you know कि 725 तक का लेवल नजर आ रहा है इसमें. एंड इन्फोसिस की बात करें, 1873 चल रहा है अभी, 1873.5 जो भी है. सो इसका आप मेंटेन कर सकते हैं 1929.2. Great. This is not an intraday trade, just to clarify to our viewers. ये एक वीकली ट्रेड बोल सकते हैं आप. Okay. So great guys, please focus on Kalyan Jewellers and Infosys. जो भी target है हमने already आपको बता दिया. You can look for these targets. And yes, Dev sir, अभी आज तो Fin Nifty है, right? And do we find any potential trade या कोई ऐसा एक strike है जो हम लोग देख सकते हैं पूरे दिन पे ये लेवल के बाद कुछ ट्रेड कर सकते हैं? यूजुअली मैं अपने जो पुराने यूजर्स होंगे उनको आइडिया होगा, मैं ऑलरेडी उनको बहुत बार बता चुका हूँ कि 9:30 इज अ टाइम वेयर ऑप्शंस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप ऑप्शन में ट्रेड करिए. समटाइम्स देयर आर ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें मॉर्निंग में मोमेंटम मिल जाता है तो बात अलग है, तो वो मोमेंट में करना चाहिए. बट डेली 9:30 को आपको ऑप्शंस करना आई वुड नॉट रिकमेंड. दूसरा, आई कैन श्योरली गिव यू फ्यू स्ट्राइक्स व्हिच यू कैन फॉलो. जो दिन भर ट्रेंड रहेगा मैं आपको कॉल पुट दोनों के स्ट्राइक्स बता देता हूँ उस हिसाब से. बट अगर आप मुझसे मेरा स्टांस पूछो, लुकिंग एट द चार्ट्स, आई वुड से थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड पे लग रहा है फिन निफ्टी. सो कॉल की तरफ ज्यादा फोकस करिए. स्ट्राइक्स में बता रहा हूँ. राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 24,000 पे चल रहा है. 24,000 टच हो गया फिन निफ्टी. 24. I'm just finalizing the strikes. Give me a moment. Sure, Dev sir.
तो ये कॉल में 23,950 का कॉल अच्छा लग रहा है, 23,950। 23,950 एंड पुट साइड पे भी मैं आपको एक स्ट्राइक बताऊंगा फॉर मॉनिटरिंग, बिकॉज ओवरऑल देखिए हम सेशन लेंगे अराउंड 10 बजे तक, 10 सवा 10 तक, बट ओवर द पीरियड जहाँ पे पूरा दिन ट्रेडिंग चलता है उसमें एटलीस्ट हम लास्ट ये वीक में तो देख रहे हैं कि दिन में 4 से 5 बार स्टांस चेंज हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन कि 4 से 5 बार हमारा जो व्यू है वो कॉल से पुट, पुट से कॉल की तरफ मूव हो रहा है, सो विच इज लाइक हाई वॉलेटिलिटी। उसकी वजह से मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि पूरा दिन क्या होगा, तो अभी के लिए मैं आपको कॉल पुट दोनों के स्ट्राइक्स दे रहा हूँ। जी, तो हमारा स्ट्राइक फॉर पुट विल बी 24,100। So 23,950 for call, 24,100 for put. कॉल का स्ट्राइक में जब आपको बता रहा था इट वाज अराउंड 9,500, अभी ऑलरेडी 112 115 चल रहा है। सो मैंने जैसे कि कहा कॉल साइड पे अभी फिलहाल लुकिंग एट द करंट चार्ट, कॉल साइड का आप मोमेंटम ग्रैब कर सकते हैं। नॉट इनिशिएटिंग एनी ट्रेड, बट अगर आप फिर भी लेना चाहो तो कॉल साइड पे रहिए तो आपका फायदा बनने के चांसेस ज्यादा है। Great. So, Dev sir, meanwhile, can we take stock queries जब तक हमें intraday कोई trade? हम इंट्राडे फाइनल करते हैं, we'll move on to the stock queries. Great. Indian Arclix bought at 317.17 at 345 shares. Bought at 17.17. He bought at high, all-time high. देखिए आप ऑलरेडी मेरे हिसाब से काफी लॉस कर चुके हो, अभी 3 रुपए नीचे तो आपका 50% वैल्यू नीचे हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा अभी के लिए इट इज एट इट्स करंट सपोर्ट। आप एक 11 रुपए का स्टॉप लॉस, देखिए ऑलरेडी आप बहुत नुकसान कर चुके हो, मैं आपको इससे आगे नुकसान करना रेकमेंड तो नहीं करूंगा, बट अगर आप 86 पैसा और रुक सकते हो तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इस पर खड़े रहिए। मे बी वहां से आपको रिवर्सल मिल जाए, अदरवाइज 11 पे तो आप एग्जिट ही कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत गवा दिया है इसमें। So Somnath ji had bought BSC for an average of 4,300. So 90 share. Hold या sell? जी, अगर आप टाइम फ्रेम अच्छा खासा पकड़ रहे हैं, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स पकड़ रहे हैं, तो आई वुड रेकमेंड प्लीज होल्ड इट। टुवर्ड्स 5,000 का मूव आपको मिल सकता है नेक्स्ट, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। साल में एटलीस्ट मैं कहूंगा, साल तो उल्टा ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, बट क्वार्टर में एक आधा बार आ जा रहा है। सो क्वार्टर में 1 से 2 बार तो ऐसा मोमेंट आ ही रहा है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड स्टॉक्स है, जैसे कि बीएससी सीडीएसएल है, उसमें एटलीस्ट 5 to 10% का एक मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मैं आपको कहूंगा अगर आप 3 to 6 मंथ्स होल्ड कर सकते हो तो आई वुड रेकमेंड आप होल्ड करिए। नीचे की साइड पे मेजर सपोर्ट एट 3,500 3,800 और ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस एट 4,500। जस्ट टू अपडेट यू, यू आर ऑन म्यूट विनाश। Okay, So sorry. just to update you, हमने जो स्ट्राइक दिया था अराउंड 9,500 पे कॉल का, दैट स्ट्राइक इज करंटली कोटिंग एट अराउंड 158। सो अगर किसी ने एंटर किया हुआ है और ऑलरेडी इन प्रॉफिट, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसको एग्जिट करिए, बुक कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज इट इज कोटिंग एट डे हाई राइट नाउ। Astral bought. Just a second, Dev sir. I just close that. Okay, yes, Astral October future bought at 1985. Should have booked the loss of 90K. Okay. फ्यूचर कहा ना उन्होंने, Right, हाँ, futures buy किया उन्होंने October.
What is the buying range? 1985. देखिए अभी के लिए इसको मैं कहूंगा पार्शियल एग्जिट ले सकते हैं। एक हाफ क्वांटिटीज आप एग्जिट करिए, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा है चार्ट पर। अच्छा मोमेंटम था फ्यू वीक्स बैक, बट फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन। तो मैं कहूंगा अगर आपने फ्यूचर्स बाय किया है तो थोड़ा स्कोप कम नजर आ रहा है। अभी के लिए आप एग्जिट करिए, कोई और स्टॉक में पार्टिसिपेट करिए, विच विल बी माय रिकमेंडेशन टू यू। Great. स्मॉल अपडेट, जो कॉल का स्ट्राइक था टचिंग इट्स डे हाई अगेन 166.90 from 95. Okay. CDSL bought at 1540. So what will be the horizon for next 6 months? What at? 1540. देखिए जैसे मैंने अभी बीएससी के वक्त ही कहा, सीडीएसएल बीएससी ये सारे स्टॉक्स में मोमेंटम नजर आ रहा है और क्वार्टर में एक आधा बार तो दे ही देता है। तो नेक्स्ट क्या टाइम फ्रेम पूछा उन्होंने? आई एम सॉरी, 6 महीने के लिए उनको होल्ड करना महीने के लिए आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। 2500 तक का भी मोमेंटम आपको इसमें मिल सकता है। तो मैं आपको कहूंगा अगर आप 6 मंथ्स वेट कर रहे हैं, सीडीएसएल बीएससी में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, चार्ट पे भी पॉजिटिव है एंड ओवरऑल भी स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड स्टॉक में आपको सेक्टर वाइज भी मोमेंटम मिल ही रहा है। ग्रेट। वी ऑन मासगांव। मजगांव आज अराउंड 4.55% नीचे था सुबह जब मैंने देखा था। अभी भी देखिए 5% ऑलमोस्ट नीचे है। और मैंने मेरे जो आई गेस आज के वॉच लिस्ट में भी स्टॉक ऐड करने बोला है, उसमें आई गेस मजगांव टॉप का है ना मैंने, राइट? आपने कल्याण एंड इन्फोसिस दिया। नहीं, वो तो इसके लिए स्विंग के लिए इंट्राडे पिक के लिए मैंने 3 स्टॉक वॉच लिस्ट में कहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज सीजी पावर, मजगांव टॉक एंड आईसीआईसीआई। राइट या यस राइट। सो आज के वॉच लिस्ट में मजगांव हमने ऐड कर रखा है बिकॉज छोटा सा करेक्शन मिला है। यूजुअली जब ये स्टॉक में करेक्शन नजर आता है तो रिकवरी भी तुरंत ही नजर आती है, उस वजह से वी हैव केप्ट इट इन आवर वॉच लिस्ट। इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। ओवरऑल स्टांस पॉजिटिव में कहूंगा एंड ऊपर की साइड पे 5000, नीचे की साइड पे इट विल बी 4000। 1:1 ट्रेड बनेगा, ऑलमोस्ट 500 रुपया ऊपर नीचे, थोड़ा 50 का गैप है पर ठीक है। ओके। एसबीआई बॉट एट 848 लेवल्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 848 है, थोड़ा तो नीचे आपके बाइंग से, बट मैं रेकमेंड करूंगा आप होल्ड कीजिए। आपको ऊपर की साइड का मोमेंटम मिलेगा इन फ्यू डेज। आपको एटलीस्ट आपका जो बाइंग रेंज है उस पे एग्जिट मिल सकता है एंड नीचे की साइड पे मैं कहूंगा सपोर्ट एट 780। विप्रो फॉर 1 वीक व्यू। ऊपर की साइड पे टुवर्ड्स 580 एंड 575 580 पकड़िए। 575 विल बी बेटर एंड नीचे की साइड पे इट विल बी अराउंड एट 525, बट पॉजिटिव स्टैंस लग रहा है फॉर अ वीक। Bajaj Auto bought at 11,920 shares. So what do you suggest, Dev sir? Bought at 11,900. 11,900 काफी नीचे है ऑलरेडी। आई गेस 3-4 दिन पहले एक लोअर सर्किट भी मारा था 10% का, विच इज राइट हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो बजाज ऑटो में एक बड़ा डिप नजर आया, उसकी वजह से थोड़ा बाइंग नजर आ सकता है। थोड़ा होल्ड करिए, बट मैं आपको कहूंगा अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए एट 9,800। GSFC bought at 218. Hold or sell? Bought at 218. 218। सेटअप थोड़ा वीक है अभी के लिए, एग्जिट ले सकते हैं तो बेटर है, या फिर पार्शियल एग्जिट कर लीजिए, हाफ एग्जिट करिए, हाफ में आप स्टैंडिंग रहिए। So before we move to more stock queries, Dev sir, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी अगर आईपीओ आता है, जैसा Hyundai का आईपीओ आया था, राइट?
So Correct. we also see some momentum in other auto stocks as well, right? And we always suggest like buy on news and on Jumbas, right? So वैसे ही अभी वारे एनर्जीज का भी है, तो कैन वी पैरेलली लुक फॉर एनी अदर स्टॉक्स इन एनर्जी सेक्टर्स? देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपका वेरी गुड थिंग, वेरी गुड पॉइंट टू हाईलाइट हियर, जहाँ पे यूजर्स को काफी बेनिफिट होगा इसके लिए। तो मैं आपको कहूंगा कोई भी स्टॉक का जब आईपीओ आता है ना, जो टाइम पर आईपीओ आता है या फिर जो टाइम पे आईपीओ अनाउंस होता है कि इसका आईपीओ आने वाला है, वही टाइम पे जो पर्टिकुलर टाइम होता है जिसपे जस्ट अनाउंस हुआ है अभी, तो वही टाइम का आपको मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका होता है। जैसे कि अगर ऑटो सेक्टर की बात करें, तो जब यूनिडाई का आईपीओ आने वाला था, 1 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 20-25 दिन पुरानी बात, आप जाके डेटा में देख लीजिए, वो टाइम पर हमें ऑटो सेक्टर में मोमेंटम मिल चुका है। और उसका ब्लूमबर्ग तक में एक ही रीजन था, इट इज बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट एवर आईपीओ लॉन्चिंग इन इंडिया व्हिच इज ह्युंडई। ऑटो सेक्टर का स्टॉक था, उस वजह से ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी हमें मोमेंटम मिल चुका है। सेम गोज विद दिस, यहाँ पे हमें ऑलरेडी, अगर आप देखने जाओगे तो एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी मोमेंटम मिल चुका है इसके आईपीओ के रिलेटेड। तो कभी भी उसके जो इश्यू डेट है या फिर उसका जो लॉन्च डेट है उससे मैटर नहीं करता। जैसे न्यूज रोल आउट होता है वही टाइम पे इंडियन पीपल आर वेरी फास्ट, वो थोड़ा सा भी न्यूज पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी उनको भनकता आता है कि ये शायद होने वाला है, वो वही टाइम पे बाई करते हैं। वो टाइम पे जब हेवी बाइंग होता है आपको एक मोमेंटम मिलता है वो सेक्टर में। तो जब तक हमें न्यूज़पेपर में न्यूज मिलता है या फिर जब तक हम सोचने जाते हैं, तब तक वो मोमेंटम ऑलरेडी मिस हो चुका होता है। सो इट इज बेटर कि अभी उस रिलेटेड में आप ज्यादा वो नहीं रखिए कि आपको इसके आईपीओ की वजह से दूसरे स्टॉक्स में भी इतना फायदा हो सकता है। बट दो आपको मैं कहूंगा कि जैसे मैं टेक्निकल टीम से वेयर आई लुक फॉरवर्ड टू चार्ट्स, हमारे जो एक्सपर्ट है जो आने वाले आईपीओ के सेशन के लिए, स्नेहा जी, शी इज इनटू द फंडामेंटल थिंग, तो वो आपको इसमें बेटर गाइड कर सकते हैं। बट दिस इज व्हाट आई फील कि न्यूज का जो मोमेंटम होता है वो ऑलरेडी मिस हो जाता है, उसके बाद पीपल रियलाइज कि हाँ इसमें करना चाहिए था। ग्रेट। प्राची जी, लाइक यस, देव सर हमेशा ऑप्शन ट्रेड प्रॉफिट करवाते हैं एंड ही गिव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। बट यस, जैसे देव सर ने ऑलरेडी हमें मेंशन किया है कि सुबह 9:30 इज नॉट अ रियली फेवरेबल टाइम टू इनिशिएट अ ट्रेड। एंड हमने काफी टाइम से देखा है, कुछ दिनों से बहुत वॉलेटाइल है एंड द स्टांस आर रियली चेंजिंग at certain point of time in the entire market hours. So let's wait for afternoon, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कुछ अच्छा ऑप्शन ट्रेड देने का। and meanwhile we'll take few more stock queries. So Dev sir, please let me know if there will be any potential intraday trade as well. जी, वो तो हम जरूर देके जाएंगे, मतलब वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग, तब तक के ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक 2-5 मिनट में वील कंफर्म। Great. So we'll take more 2 to 3 Before queries. moving forward, sorry to interrupt. No problem. Before moving forward, let's initiate a trade in ICICI Bank. एक spike नजर आया है, which can be favorable for us. ICICI Bank quoting at 1275.75. The target about for ICICI will be 1294.9. And the stop loss will be 1263. Okay. So I'll just repeat again the trade, Dev sir. We have to buy ICICI Bank for intraday trade. We have to buy near current market price, that is of 1276 with a stop loss of 1263. We are looking for a target of 1294.9, right? Plus 129. Yes, okay, perfect. Great. So guys, हमने इंट्राडे ट्रेड भी इनिशिएट कर दिया है आईसीआईसीआई बैंक पे। वी हैव टू बाय इट एट करंट मार्केट प्राइस, जो कि अभी 127677 या 1775 के आसपास रेंज में चल रहा है। यू हैव टू बाय इन दैट रेंज विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1263। टारगेट हमारा अपसाइड पे रहेगा 1295। जस्ट एक पॉइंट था, इसलिए आई एम कंसीडरिंग 1295। आप 2-4 पॉइंट पहले भी बुक कर पाओगे। बुक अगर कर पाए प्रॉफिटेबल ट्रेड, तो प्लीज मेक श्योर यू बुक द प्रॉफिट। देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि ये यहाँ पे जो ट्रेड होता है, वी आर मैक्सिमम ईयर फिर 10-15, राइट? और ये इंट्राडे ट्रेड है, दिस इज फॉर द एंटायर डे। तो यहाँ पे मैं यूजर्स को एक चीज बताना चाहूंगा, यू ऑल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एज वेल, बिकॉज मैं पूरा दिन आपको अवेलेबल नहीं रहूंगा बताने के लिए कब हमें आईसीआईसीआई बैंक बुक करना है।
So it is to your discretion. मैंने आपको levels बता दिए क्या होगा stop loss. At least stop loss तो please maintain करिएगा. और टारगेट आप अपने हिसाब से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यू आर स्मार्ट इनफ. आप यहाँ पे पहुंच गए हो मतलब आपको स्टॉक का नॉलेज तो डेफिनेटली है. बट स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, वो आपको जरूर मेंटेन करना है. टारगेट भी मैंने आपको बता दिया. स्टिल यू आर स्मार्ट इनफ टू एक्ट अकॉर्डिंगली जैसे दिन का मोमेंटम रहता है. राइटली सेड देव सर. सो आई वुड ओनली सजेस्ट गाइस, अगर आपको 1 to 75 के रेंज में बाय करने कहा गया है और अभी फिलहाल 1 to 87 या 85 87 में चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस प्लीज ट्रेल करके बाइंग रेंज पे कर लो, so that at least you will book some profit rather than making loss, right? Correct. Stop loss trailing is the best thing you can do. Right. So you just follow this step guys. आप लोग definitely हर बार ट्रेड में प्रॉफिट करते रहोगे. So yes, we'll take few more stock queries like 2 to 3, then we'll wrap up the session. Yes sir. IRFC bought at 181. Any upward move or can we exit this stock? Bought at 181. देखिए मैं कहूंगा चार्ट में थोड़ा वीक नजर आ रहा है एंड रेलवे में हमें काफी मोमेंटम मिल चुका है. उसी का थोड़ा बहुत करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो. कोई मेजर न्यूज या अपडेट नहीं है रेलवे की वजह से. बट मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपने इतना होल्ड किया है तो आपको एक अभी का सपोर्ट में बता देता हूँ जहां तक आप होल्ड कर सकते हो. इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउस, आई नो थोड़ा बड़ा गैप है, 135 तक अगर आप होल्ड कर सको तो फिर होल्ड कीजिए. वरना फिर मैं तो कहूंगा ऑलरेडी आप अच्छा खासा नीचे चल रहे हैं तो यहाँ पे एग्जिट लेना सही होगा क्योंकि सेटअप भी थोड़ा सा वीक है. नेशनल एल्यूमिनियम. गुड मोमेंटम, अच्छा खासा मूव है. 240 की तरफ ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे 220 which is 1:1, 20 points up, 20 points down. Not 20 points up, sorry, 12 points ऊपर and around 28 points नीचे. So मैं आपको कहूंगा 200 का नीचे का आप सपोर्ट पकड़िए एंड ऊपर की साइड पे 240 का रेजिस्टेंस. Sir, CG Power में any buying range that I can hold for 2 to 3 years? 2 to 3 years. मैं तो आज इंट्राडे कैंडिडेट में भी सोच रहा था सीजी पावर. सुबह अराउंड 4 to 5% ऊपर था, अभी 2% ऊपर है. नहीं दिया मैंने, ऑलरेडी 3% नीचे चल रहा है. बट अगर 2 to 3 years कह रहे हो तो मुझे लगा, मतलब जैसे कि हम चार्ट को देख पा रहे हैं, मेरे इधर एक लेफ्ट में सीजी पावर का चार्ट ओपन ही है कि मैं आपको ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऐड करने कहा था. तो सीजी पावर आप 1000 तक का रेंज पकड़ सकते हो 2 to 3 years में. कम रेंज बता रहा हूँ, आई नो 1000 इज वे टू लेस फॉर 2 to 3 years, बट इमीडिएटली ये नजर आ रहा है उसके ऊपर का 2 to 3 years का टाइम फ्रेम में इतना बड़ा देना इज नॉट, यू नो, बनता नहीं है इतना बड़ा व्यू देना. क्योंकि जो चार्ट के हिसाब से है फिलहाल के लिए 1000 तक का रेंज दिख रहा है. आप 1000 पे बुक कर लीजिए, भले वो एक साल में आ जाए. Okay, so this will be the last query guys. There's a Vasconic bought at 72, 750 quantity, please suggest. Which stock? Yes, Vasconic Engineers, I guess. Yeah. Bought at 1750. कोई गलत Sorry, 72. Bought at 72. सेटअप थोड़ा सा वीक है, बट द थिंग इज 55 का सपोर्ट है. इफ यू कैन होल्ड फॉर 55, 2 रुपया नीचे भी 50 वाले स्टॉक में बड़ी बात है. 55 का सपोर्ट है एंड ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस एट अराउंड 66. So Akhil ji, this will be the last query that we are taking of yours. Sapphire Food bought at 368. And before we move forward, I just wanted you to know that ICICI Bank breaking its day high again and again, currently at 1281. 1281, right guys. Guys, please make sure आप लोग अपना stop loss trail कर लो. और देखिए आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए. अगर आपने अपना स्टॉप लॉस बाइंग रेंज पे भी ट्रेल कर लिया तो आप यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन प्रॉफिट. Right. तो आप अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट ट्रेल करिए कि आज का ट्रेड हमारा लॉस में ना चले जाए. But we can see a potential in this trade, there, sir, right? Yes. I am asking you to hold and not book it right now. Right. But at least stop loss ऊपर लाइए थोड़ा. Right.
296 तो 1296 तो easily दिख रहा है यहाँ से. So let's wait and hope that we will get the trade profitable. And yes, this will be the last query, Dev sir. Sapphire Ford 368 buying range. Bought at what range? Bought at 368. Support at 330 and resistance at 355. So थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा आपके एग्जिट के लिए, बट अभी के लिए वही रहेगा. Great. So that's it, guys, from our end. Dev sir, if you want to add something for whatever the stocks that we have suggested, and then we can end the session. बस अभी के लिए यही होगा. Hyundai IPO अराउंड 1.12% नीचे की साइड पे फिलहाल. सो मैं आपको कहूंगा फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, एज हमें हमारे एक्सपर्ट ने कहा था, आई गेस सिद्धार्थ सर ने कहा था कि फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स Hyundai अच्छा है, लिस्टिंग गेन्स के लिए फिलहाल नहीं है. तो वही हुआ है. तो यही एक छोटा सा अपडेट था जो मैं आपको कहना चाहूंगा. बाकी थोड़ा कवरिंग मिल रहा है बिकॉज फ्रेश लिस्टिंग एंड फ्रेश बाइंग नजर आएगा. तो आप इंट्राडे में Hyundai को भी ध्यान में रख सकते हो आज के लिए. Great. So great. That's it, guys, from our end. Guys, हमने already IPO session schedule कर दिया है जो कि 11:30 बजे होगा, और वो हमारा सेशन स्नेहा पोद्दार जी लेंगे. शी इज द फंडामेंटल एक्सपर्ट. तो आपको वारे एनर्जीज के बारे में जो भी इन एंड आउट होगा, कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाला है, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग एंड मेनी मोर थिंग, जैसे कि हमने Hyundai IPO के बारे में भी किया था सिद्धार्थ सर के साथ. The same we will be going to conduct a session at 11:30 a.m. in the morning. Please make sure you don't miss the session, so that you don't, miss the chance to get this IPO allotment for yourself, right? So yes, thank you guys for joining. Please make sure you join us at 11:30 a.m. in the morning for Vara Energy's IPO session. So thank you, Dev sir. Thank you.